Hi guys, welcome back to our channel and I wish you a very happy new year 2019 and my name is Rajat. And I'm Shweta. A very happy new year. So guys, in this video we are going to explain you about the reading module of the IELTS exam. So let's begin. Hi everyone, welcome to our channel Canada Delite. For more interesting videos, just stay tuned and subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon. In the reading module, you will be giving a time duration of 60 minutes and the number of passages can vary from 3 to 4 and sometimes 5. And just make sure you put more emphasis on the last passage as this is the most difficult one. But this doesn't mean that initial 3 passages are not of much importance. You have to give equal importance to all the passages. And there will be a total of 40 questions and no negative marking in this. And there are a variety of questions in the reading module. Well, yes, there are variety of questions as you said. Correct. There can be 4 types of questions that you will be seeing in the question paper. The first one can be the true and false and not given. And this true and false can also be like yes or no. You have to read the instructions carefully. The second type is paragraph completion or a flowchart completion. The third type will be match the headings. There will be number of headings that will be given to you which you have to match with the respective paragraph. And the other type, the last type is 1, 2 or 3 word question and answers will be seen by you. Well, this was the question paper. The answer sheet of the reading module is being displayed on the screen for you. Guys, I think Shweta has made a very important point. बॉस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, राइट? सो उसमें ट्रू और फॉल्स लिखा हुआ है या येस नो लिखा हुआ है. अगर आप येस नो की जगह ट्रू और फॉल्स लिखोगे और ट्रू और फॉल्स की जगह येस नो लिखोगे, बॉस ज़ीरो. ठीक है, तो जस्ट मेक श्योर कि पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, उसी के बाद आंसर करना है. इट्स नॉट लाइक दैट कि ठीक है ट्रू और फॉल्स आ गए तो येस नो लिख दिया एंड वी मूव ऑन. सब गलत हो जाएगा बॉस. ठीक है, आता होगा फिर भी गलत हो जाएगा. तो जस्ट मेक श्योर यू रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली बिफोर अटेम्प्टिंग एनी आंसर्स, राइट? ओके, एंड फ्रॉम आवर पर्सनल एक्सपीरियंस वी आर गिविंग यू 2 स्पेशल टिप राइट नाउ. तो दिमाग में बिठा लो या कहीं भी बिठा लो. पहला पॉइंट कि आपको सारे आंसर्स पेंसिल में निकले हैं. नो नीड ऑफ पेन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज करेक्शंस होंगे, गलत लिखोगे, बाद में रिवाइज करोगे, आंसर्स दोबारा मिलेंगे. कभी आपने नाउन नहीं लगाया, कभी एडवर्ब नहीं लगाया, कभी प्रपोजिशन नहीं लगाई, वट एवर एंड सो फोर्थ, राइट? सो जस्ट मेक श्योर आप 3-4 पेंसिल लेके जाओगे एंड यू हैव टू राइट योर आंसर्स इन पेंसिल. राइटिंग टास्क हो, रीडिंग मॉड्यूल हो, कुछ भी हो, you have to write with pencil, right? Yes. And also to make any correction they can erase. Yeah, exactly. Sharpener, eraser, pencil अपने साथ रखना है हमेशा के लिए. ठीक है? So and second is no cursive handwritings should be there. Although it's allowed in IELTS exam, but just make sure आप सारे answers अपने capital में लिखो. तो you have to write your answer in capital letter. I will give you an example कि आप cursive में लिखते हो तो क्या होगा. Okay guys, so as I was telling you that you have to write in capital letters, not in the cursive or the handwriting cursive thing. So suppose if your answer is robot for some of the question, right? अगर आपका robot है आंसर, तो होता क्या है most of the cases में कि जल्दी में हम ROBERT robot ऐसे लिख देते हैं, right? और we can write ROBERT. सो एग्जामिनर क्या सोचेगा कि दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज नॉट आर और इट कैन बी एन, राइट? क्योंकि हम एन भी ऐसे लिखते हैं और आर भी ऐसे लिखते हैं. सो दिस कैन बी रॉन्ग, राइट? सो इसको बचने के लिए जस्ट मेक श्योर यू राइट रॉबर्ट एज दिस. कहीं पे कुछ कन्फ्यूजन की गुंजाइश मत छोड़ो. Okay guys, so this is all from our side in this particular reading module section, and for more videos just subscribe to our channel, like our video, share our video, and if you have any feedback regarding our videos, we would love to hear them. If you can comment on the comment section below. If you have any query or any question to ask about IELTS, any of the question you can ask us on the comment section. Till then, stay tuned, take care.
Bye bye. See ya.